What's up? Today I'm going to teach you a very new subject of technical that is for the electronics, electrical and instrumentation engineer. That is common for all the three branches, and this subject is dealing with the communication, the signaling. So you can guess what it is. It is nothing but a signal and system. It is a very important subject. So it is nothing but a signal and system. So in signal and system, what we are going to study in the coming series, we will discuss in a brief that first there will be introduction class, in which we will see the basic of the basic signals, and next we will go through the transformation like LTI system. Second, we will go through the LTI system, that is linear time invariant system. Okay. And thirdly, we will cover about the various type of transformation. But before transformation, we are going to complete our series, that is Fourier series. Fourier series. It's very important and very interesting series. We'll go and further we'll go through the CTFT, LT system, Laplace transform, and discrete time Fourier. Okay, transform. Okay, we'll see. And finally the jet transform, and the last one is not based is discrete DFT. Okay, DFT. So basically in DFT all this topic will go to see, but in Fourier series we will see that TFS and EFS form, exponential and trigonometrical Fourier series form, and exponential form we will going to see. The best and the very good books for the signal and system is nothing but mainly the Open. It's very common. Open and Nawab. It's very famous and widely available. You can just go through the World Book Center. And second one is the signal system by Tarun Kumar Rawat. That is of simple language or hiking 1 minute. Okay. Now see the introductions. Now we are going to start our introduction class for the signal and system. Okay, what is introduction? Firstly, basically the signal and system consists of the two terms, that is nothing but signal and system. So two terms, one is the signal, another is the system. So first of all, we will discuss about what is signal. So signal is nothing but it's actually it's indication about which some amount of information is conveyed. When we talk to someone, we are just giving the conveying through the verbal or non-verbal. That is basically a signal only. Now, okay. Now see, we are just going to write the definition. Okay, signal is what? Signal is function of two or more variable. Function of two or more variable, more independent variable that convey us information. Okay, so signal system is nothing but a function of two or more independent variable that convey us information basically. Or we can say that a signal is an indication about which some amount of information is conveyed. It's indication about which some amount of information is conveyed. सिग्नल क्या है? बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन जो हम देते हैं या हम लेते हैं इन्फॉर्मेशंस जो कन्वे हो रहे हैं एक दूसरे या एक ग्रुप के बीच में इन्फॉर्मेशंस. ओके, so that is the signal. Signal is represented basically as a function of one or more independent variable, like say example, that is nothing but we can say that signal may be speech signal, voice. Speech is nothing but a one-dimensional signal. So first of all, let's clear the definition. A function of two or more independent variable that convey us information. When we talk about this, let's see this example. Let A equals to am cos omega t and B is f of x, y. Okay, and C is f of x, y, z. Or we can say that कोई सिग्नल है मान लीजिए, let us suppose that in signal may be speech signal, may be voice, maybe voice nothing but audio.
signal may be picture, okay, signal may be video. That is basically audio video. Okay, so ये मतलब कि let us suppose this is signal. This is here what? B is a signal which is function of x and y. Here x and y is dependent variable of B. Okay, that means B is dependent of x and y. So this is known as nothing but independent variable, and this is called dependent variable because B is a function of x and y. That means if x increases, B will also increases. If y increases, it decreases as according to the function, what kind of function it is, so it decreases. Like here E equals to am cos omega naught t. That means if omega t value increases or decreases, of course cos value will be decrease or increase, and as per this there will be variation in A, but in variation is A, there is nothing changing in this. So this is called dependent variable, that is called independent variable. So similarly, if we take three variable function, is equals to fx y z, that is three-dimensional function, fx y x y z. So x y z, they are three variable, they are independent variable function, and this is dependent variable. Okay. If we write here y equals to mx, okay, that means x mx plus c. That means the value of y is depend on the value of x, okay, but x not depend upon y directly. So signal can be one-dimensional signal. Signal can be one-dimensional signal like speech. Okay, simply speech. Two-dimensional signal can be x and y axis like picture, and three-dimensional signal can be x, y, z or time axis. Okay, so speech signal can be like this, x, y signal can be, y signal can be like this, picture signal can be in this axis, and for audio and video this signal can be in z axis, x, this is y, x and z, or in time axis. Okay, like the TV, here we see the three-dimensional, so it is called three-dimensional signal. It is called two-dimensional signal. It is called one-dimensional signal. Okay. Now let's see that what are the sequences. Before going to start, let's discuss one topic. We human eyes. What is pixel? Pixel क्या होता है? एक स्क्रीन को जब हम डिवाइड करते हैं, when we divide the screen into number of rows and columns, small this boxes, the small box is called one pixel, and this is the x-axis, this is y-axis. Okay, so this is y and this is x, but the smallest, this square is pixel. Human eyes is having, interesting, human eyes is 576 resolution पिक्सल्स. इंसान की जो आँख होती है वो 576 पिक्सल होता है, और जो ईगल होता है इसका होता है 4 to 5 times देयर ह्यूमन आइज. इंसान की आँख से 4 से 5 times मोर द रेजोल्यूशन क्या पिक्सल है एक्चुअली में, पिक्सल ऑफ दिस वन, मतलब कितना हम जूम कर सकते हैं पिक्सल्स. So now we will discuss about what are the sequences. Sequence before transformation. हम कोई भी सिग्नल को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं. सीक्वेंस बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन. सीक्वेंस में मतलब कोई भी सिग्नल कैसे करते हैं. सबसे पहले वी आर जस्ट एम्पलीफाइंग सिग्नल में भी वेरी बिग सिग्नल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द सिग्नल. बिफोर टेकिंग फर्स्ट वी हैव टू टेक द एम्पलीफायर in which we have to amplify the signal. We have to increase or decrease the value of amplitude. Okay, for which you require amplifier. Okay, the second one we have to take capture. We have to take the signal. Okay, third one step is the store. We have to store the signal. And fourth one we have to remove the filter out of noise or any errors. Filter out the noise. So we can see in technical in amplifier that means enhanced. Okay, qualities should be enhanced. And capturing means extracting. We have to extract a signal, and for store the signal same, and for filtering output is
filtering, we use filtering, various type of filtering is there. Okay, we are just using. So this is signal, we have to first enhance, then extract, then store, then filter. So these are the steps. Now see, now we will discuss about the various type of signal, okay, in the next lessons. Okay, so now we see the type of signal. Basically, type of signals. टाइप ऑफ सिग्नल का क्या होता है हमारा, तो एक तो कंटिन्यूस सिग्नल होता है जिसका एनालॉग बोल सकते हैं, एनालॉग, दूसरा हम बोल सकते हैं डिस्क्रीट, दूसरा हम बोल सकते हैं डिजिटल, इसको हम एनालॉग को हम कंटिन्यूसली बोल सकते हैं। ये बाकी ये दोनों ये है हमारा, इसको नॉन कंटिन्यूस बोल सकते हैं। चाहिए टाइप ऑफ सिग्नल्स हैं, एनालॉग सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल, डिजिटल सिग्नल और रैंडम सिग्नल और नॉन रैंडम सिग्नल। ओके, सो वी विल डिस्कस फर्दर इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट इज डिस्क्रीट, व्हाट इज एनालॉग, व्हाट इज कंटिन्यूस, व्हाट इज नॉन कंटिन्यूस सिग्नल, व्हाट इज नॉन कंटिन्यूस सिग्नल। ओके, नाउ सी इन द नेक्स्ट। Hello guys, now we will see the first type of signal, that is nothing but a continuous signal. Second type is called discrete signal, and third type we will see. Let's see. Okay, this we are going to see. The first one is a continuous signal, and second, both are the 2, 3 are non-continuous. These both are non-continuous signal. Continuous signal is also called analog signal. Okay, this is also called analog signal. Now see, very simple definition पहले बताऊंगा सबका, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस सिग्नल नाम से क्लियर है कि कंटिन्यूस सिग्नल इज अ सिग्नल विच, कंटिन्यूस सिग्नल इज सिग्नल विच डिफाइन, विच इज मैथमेटिकल कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t फ्रॉम -infinity टू infinity। मतलब ऐसा सिग्नल जो कि समय के सारे वैल्यू के लिए डिफाइन हो और कंटिन्यूस हो एट इंस्टेंट फ्रॉम -infinity टू infinity, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सिग्नल। या हम बोल सकते हैं कि ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूस हो टाइम में भी और एम्पलीट्यूड में भी। ओके, सिमिलरली डिस्क्रीट सिग्नल ऐसा सिग्नल डिस्क्रीट, अच्छा इस सिग्नल बोल सकते हैं क्या हम, कंटिन्यूस सिग्नल और व्हाट, कंटिन्यूस सिग्नल इट्स सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल और सिग्नल which are mathematical continuous in nature, continuous, ये बोल सकते हैं सिग्नल which is mathematically continuous for every value of time, yeah, and define at each instant of time, that means -infinity से लेके +infinity तक। ओके, पूरे पे डिफाइन ऐसे सिग्नल जो विच आर मैथमेटिकली कंटिन्यूस इन नेचर, मैथमेटिकली कंटिन्यूस होनी चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम एंड डिफाइन फॉर एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम -infinity to infinity, or we can say that a signal which is continuous both in time, a signal which is continuous both in time and amplitude। ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूस हो both in terms of time and amplitude, that is called continuous signal। ओके, now see, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस सिग्नल है
इंसान के में जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस सिग्नल है। जब तक इंसान जिंदा है वो कंटिन्यूसली रहेगा। ब्रेन का जो सिग्नल है ना, ब्रेन में जो वर्किंग हो रहा है पूरा बड़ी पार्ट्स जो थॉट स्पीच जो कर रहा था उसमें भी एक सिग्नल है, तो वो कंटिन्यूस सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर लेट अस सी दिस एग्जाम्पल दैट लेट फंक्शन let's take x t equals to exponential minus 2t. Okay, this is one exponential function, okay, into ut. Okay, if we put the value of at 0, what we will get? Exponential to the power 2 into 0 into u0, that is nothing but 1 by 0. What? Anything the power 0 is of course 1. Okay, now see, anything to the exponential minus infinity is nothing but 0. So for this value it is 1, and for finite value it is 0. So this is the exponential minus 2t ut. Okay, this is a signal. That means this is a continuous signal. Okay, from between this to this. Okay, not a example like this. This is a signal. This here it is 1, here it is 2, 16 and 2. So here it is continuous, okay, but here also it is non-continuous. At this point, it is non-continuous. Here also non-continuous. So at the point of vicinity, amplitude is not defined. At the point of continuity there and there, amplitude is not defined. That is piecewise or discontinuous function. Discontinuous. Okay. Now see. Now let's see about the discrete signal. So what is discrete signal? A signal which are not mathematically continuous. Okay, which are not mathematically continuous, but signal which is continuous in amplitude but discrete in time or integer value. मतलब signal a signal which is continuous in amplitude. Amplitude तो continuous है उसका, लेकिन but discrete टाइम उसका discrete. ठीक है, तो कैसा सिग्नल है वो हमारा discrete signal, ठीक है ना, discrete signal. And signal which is continuous in amplitude, which is continuous in amplitude but discrete in time, that is called discrete in time. मतलब discrete in time मतलब क्या है? discrete मतलब integer value है, रियल नहीं, decimal value. जैसे we have already taken या अच्छा हम बोल सकते हैं और a signal which is not mathematically continuous, signal which is not mathematical continuous but defined only at a certain interval of time. कहने का ये मतलब ऐसा सिग्नल जो मैथमेटिकली कंटिन्यूअस ना हो लेकिन सिर्फ डिफाइन हो एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल. जैसे देखिए, जैसे हमने ये फंक्शन लिया था ये एक्स टी, हम उसको क्या करेंगे डिस्क्रीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कैसे करते हैं. जैसे इसके लिए हमने क्या किया कन्वर्ट करेंगे तो सैम्पलिंग करेंगे. ये हमारा एक्स टी और सैम्पलिंग करेंगे यहाँ पे, ये सैम्पल है, ठीक है.
सैम्पलिंग करने के बाद वो एस मिलेगा, सैम्पलिंग टाइम है। ओके, अब देखिए कि एक्सपोनेंशियल कितना है, -2t, ठीक है, इंटू यू टी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सैम्पलर, तो हम मान लेते हैं ये टी है, टी को एन टी एस कर दी, विच इज़ यहाँ, ठीक है। अब हम एन की वैल्यू लेंगे 0 +-1 +-2 इस तरह। टी एस हमारा सैम्पलिंग रेट है, सैम्पलिंग टाइम है, सैम्पलिंग मतलब कितने इंटरवल पे हम सैम्पलिंग ले रहे हैं, ओके, सैम्पलिंग रेट, ओके। हम एज्यूम करते हैं टी एस को 1 लेते हैं, एज्यूम हम अपने तो हमारा एक्सन क्या हो जाएगा, एक्सन टी एस क्या हो जाएगा, एक्सन हो जाएगा, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल -2nts into u of nts equals to exponential -2n, ये तो 1 है, into u of n, okay? इसको हम अगर हम n की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x of t का सैम्पलिंग क्या हो जाएगा, हमारा बेसिकली एक्सपोनेंशियल -2 to 0 into u of 0 is nothing but 1। सिंपल मतलब क्या होगा इसका, क्या होगा, देखिए मतलब तो होगा इसका कि अगर हम ये सिग्नल तो हमारा दिस इज सिग्नल एक्सपोनेंशियल -2t u of t to x of t है। सर आप सैम्पलिंग करेंगे, जो सैम्पलिंग रेट आएगा हमारा, सैम्पलिंग रेट क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1। फिर अगर हम n बराबर हम अगर 1 रखें तो x ऑफ क्या जाएगा, फिर हमारा जो आ जाएगा वो सैम्पलिंग करने के बाद ये -2 into u of 2 आएगा, तो एक्सपोनेंशियल -2 आ जाएगा, फिर नीचे -4 आ जाएगा, 2 है, तो इस तरह। तो अगर हम इसका सैम्पलिंग कर लें, अगर मान लीजिए यहाँ पे रखें -2 रखें, -3 रखें, इस तरह सैम्पलिंग मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरवल है, ये मेनली क्या है, n मिलेगा कि हम n, तो हम क्या करते हैं, तो हमें ये सैम्पलिंग मिलेगा, मतलब ये कंटिन्यूस टाइम था, ये कंटिन्यूस इसमें था एम्पलीट्यूड और टाइम में। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, कंटिन्यूस तो है एम्पलीट्यूड में लेकिन डिस्क्रीट है टाइम, ओके। तो इस तरह है कि अगर हम कहीं पे सिग्नल को लिखते हैं एक्स एन टी एस, और एक्सन लिख लेते हैं, अगर हम टी एस की जगह 1 लेते हैं, तो अगर हम शिफ्ट करते हैं एक्स शिफ्ट करेंगे तो क्या होनी चाहिए, क्या एक्स ऑफ एन -1, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, ये करेक्ट किया, एक हम हटा देते हैं। सी एक क्वेश्चन है कि एवरी डिस्क्रीट सिग्नल इज अ रैंडम सिग्नल, एवरी डिस्क्रीट सिग्नल हैपेंस, every discrete signal is not a sampling of continuous। क्यों, क्योंकि ऐसी जो एयर कंडीशन यूज़ करते हैं हम घर में, वहाँ पे क्या देखते हैं कि टेम्परेचर हमारा जो है, हमारा 8 डिग्री है, 7 डिग्री है, 6 डिग्री है, 5 डिग्री है, तो एसी में। या फिर क्रिकेट के मैच में देखते हैं हम, क्रिकेट के मैच में हम देखते हैं बॉलिंग आवर्स, कई बॉलिंग कर रहा है, ये नंबर ऑफ आवर्स पे हम देखते हैं, ये आवर्स है, ओवर पे कितना रन स्कोर,
ये बार गिराता है, ये बताता है नंबर ऑफ, ये इस तरह टीवी, क्रिकेट है, चाहिए एयर कंडीशन जो है हमारा इस से। नाउ सी द थर्ड वन इज basically the digital signal. What is called? It is nothing but डिजिटल सिग्नल। क्या होता है कि ऐसा सिग्नल which is both discrete in amplitude and time, मतलब जैसे ऐसा सिग्नल जो डिस्क्रीट में है और टाइम में, दोनों में डिस्क्रीट है, ओके, और उसका डिजिटल सिग्नल, ओके। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कि सैम्पलर जो होता है वो क्या करता है, सैम्पलर एक कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करता है, ओके, मतलब कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड कंटिन्यूस टाइम से ये कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड बट डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली जो हमारा क्वांटाइजर क्या करता है, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल को हमारा डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करता है, ओके। कंप्यूटर में टाइम में कर दिया, टाइम डिस्क्रीट टाइम को किया ना, और यहाँ एम्पलीट्यूड करवाना, यानी यहाँ टाइम, यहाँ मैंने एम्पलीट्यूड हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एम्पलीट्यूड करते हैं तो 4.6 वैल्यू से हम ले सकते हैं, इसको 4 भी कर सकते हैं या हम 5 भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे 4.6 का 4 करेंगे यहाँ पे एरर आता है 0.6 का, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर डिजिटल सिग्नल में आता है। उसके बाद हम सैम्पलिंग एंड होल्ड सर्किट करते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं डिजिटल सिग्नल। तो इसलिए देखा सिग्नल इज कंटिन्यूस इफ इट इज़ बोथ कंटिन्यूस इन टाइम एंड एम्पलीट्यूड, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सिग्नल। इफ अ सिग्नल इज कंटिन्यूस इन टाइम and is called continuous signal. If a signal is continuous in amplitude and discrete time, is called discrete signal. A continuous signal which is both discrete in time and amplitude is called what? Digital signal. Now we will just go through the different type of the signal, standard signal, okay. Now we will see the different type of the standard signal. I think you have enjoyed a lot in this session. Kindly comment on the box of YouTube, comment box. How are you feeling after watching this video, okay? Now we will just go through different type of signals. Hello guys, what's up? I think you have enjoyed a lot in the previous lecture and this is the first lecture, part 2, or we will continue. This is the main type of signal. Here we will discuss the type of signal. Type of signal was, so first of all we will just discuss the unit step signal, okay. Unit step signal we will discuss what is unit step signal and the property. Second we will just discuss rectangular signal, okay, or it is also called gate signal, okay. So why it is gate? Because the signal is less like a gate, no, seems to be like a gate. Third one we will discuss continuous impulse signal, and the fourth we'll see, and in this continuous impulse signal we will just see the different property of this continuous impulse signal, and fourth we will see about the unit ramp function, okay. And if time permit we'll just go through the next triangular signal, okay. Now see the first one is the unit step signal. It is very important. Unit name it's clear that the step is unit, okay. See, unit step signal is by diagram is represented by this. The amplitude of this signal is this, and it is by u of t. U is function of time t. This is continuous. That means that means ut, the value of ut is 1 for all the value of time is greater than 0, and ut value is 0 for time less than 0, okay.
It is called mathematically defined of unit step function. Mathematically at t is ut u is discontinuous. So we are just assuming as 1/2 that is discontinuous. At t equals to 0. But we must take u this as the value of u at 0.5. Okay. Why we consider this? We will discuss further. Now where we use unit step signals? We use unit step signal for stability check. Stability check means whether system is stable or not, for which we have to take the stability of system. That means for which we check bonded input and bonded output. That means we give step signal to bonded input. We give step signal to bonded input, and output is bonded output, then it is called stable signal, stable system. Okay. And secondly, it is used for transient analysis. Transient analysis, in which we see the control time parameters. We just see like PR, rise time, peak time, for which we just give this unit step signal. Secondly, first we have stability check, for which we give the steps signals to the bonded input signal. Okay, like this is system, we give this unit step, and if we get the bonded output to this bonded input signal, then it is stable. Okay, otherwise not stable. Okay, now see, ut at origin is discontinuous. We have already seen this one, discontinuous t equals to 0, but we generally take u0 equals to 1 to make signal function. What? We see the signal function as 2ut. Okay. Now we see the next is the gate function or the rectangular function. So it is represented mainly by this is the amplitude A minus t by 2, that means all this time period is t. So it is represented by A racked t by t, or A by this or this both. A racked t by t or A by t by t. Basically, the value of xt is A. The value of this one is A, amplitude is A, for which from minus t by 2 to minus t by 2, for the value of minus t by 2 to t by 2. Okay, and its value is 0 for else. Okay, so this is for rectangular function. Now let's see the next. We will elaborately discuss the continuous impulse function. This is impulse function, that means at 0 there is infinite value. That means del of t is infinite for value of t equals to 0, otherwise 0 for else. Okay, और t is जब 0 नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं